the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Section 115B AB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case,
the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc. are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too.
These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honorable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports
gradually and apply a moderate tariff of 7.5%, certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir,
duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो बजट है वो अब संसद के पटल पर रखा जा चुका है और कितना बड़ा ये बजट है हम आपको बताएंगे। करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे देश के विकास पर और कहां फोकस है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो बजट है नए भारत की नींव रखता है। जिस तरह से वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो अमृत काल चल रहा है, 75 साल आजादी के हो चुके हैं और अब हम 75 से 100 साल का ये जो 25 साल का सफर है उसकी एक नींव रखता हुआ ये जो बजट है वो किस तरह से बुनियादी ढांचे पर फोकस करता है। आगे जाते हुए जो कोरोना की चुनौतियां हैं, क्या उससे निपटने में ये जो बजट है वो कुछ बड़े फायदे पहुंचाता है देश को, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैसे खर्च होंगे वो किस जगह पर खर्च होंगे और कौन कौन सी बड़ी प्राथमिकताएं हैं देश की। तो सबसे बड़ी बात जो सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्या टैक्सेशन में कोई बदलाव होगा, आपको बताएं कि ये टैक्स की जो पॉलिसीज हैं उनको लगातार एक निरंतरता देने के लिए, एक सरलीकरण के लिए, एक प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम के लिए वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले टैक्स की रेट्स थी वो आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब्स वही रहेंगी। इसलिए आपको बहुत बड़ी जो बात है ये समझने की बात है कि कोई नया जो टैक्स है वो देश पर नहीं लगाया गया है। आप समझें कि ये बजट की दिशा है क्या। इतनी बड़ी मुश्किल में फिस्कल डेफिसिट को बरकरार रखना, फिस्कल डिसिप्लिन को बरकरार रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नई चीजें भी हैं जो इस बजट में की गई हैं वो हम आपको बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा फोकस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, पीएम गतिशक्ति जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे उसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ जोड़ा गया है और आगे जाते हुए ये पूरे 25 साल की आधारशिला रखेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये जो बुनियादी ढांचे पर फोकस है वो एक आधार तैयार करता है। 2022 का ये जो बजट है स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि बुनियादी ढांचे पर फोकस करता हुआ बजट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ जोड़ा गया और 7 स्तंभ, एक तरह से कहें कि ये जो बुनियादी ढांचे का जो सूरज है वो कौन से 7 पायदान या 7 घोड़े हैं जिन पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो गति शक्ति के बाद जो खेती बाड़ी है वो सबसे बड़ा फोकस इस बजट का नजर आता है। 3.9% का जो ग्रोथ रेट है वो स्पष्ट तौर पर कहा गया है। 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो किसानों को मिलेगा।
तो किसानों को एमएसपी के जरिए सरकार ने एक बहुत बड़ी जो राशि है वो ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा खांचा रखा है। आपको बताएं कि ये जो फोकस है न केवल किसान बल्कि कृषि क्षेत्र को किस तरह से हाईटेक तकनीक के साथ जोड़ा जाना है, किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जोड़ा जाना है, किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जोड़ा जाना है, उसकी एक आधारशिला लगता है। अब तक हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि किसानों को लोन कितना दिया जाए, किसानों के लिए बुनियादी ढांचे में कितनी बढ़ोतरी की जाए, किसानों के लिए जो सिंचाई की योजना है उस पर पैसे कितने बढ़ाया गया। ये पहला बजट ऐसा नजर आता है जो ये कहता है कि किसानों को उनके हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता, किसानों को उद्योग जगत के साथ जोड़ना ही होगा, किसानों को क्रेडिट लाइन के साथ साथ जो नई तकनीक है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ जोड़ना ही होगा। और इसलिए ये बजट आपको आगे चलते हुए पूरे कृषि क्षेत्र की जो आधारशिला है उसको बदलता हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नदियों को जोड़ने की योजना है उस पर बहुत ही स्पष्ट फोकस दिखा है। केन बेतवा प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए 44,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उस बजट में उसको मंजूरी दी गई है, और जो 5 अलग अलग जो नदियों को जोड़ने की योजना है उसको भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है। एमएसएमई सेक्टर जो कि एक बैकबोन रहा कोरोना काल में, एमएसएमई सेक्टर जिसने कि लोगों को बचा के रखा, रोजगार को बचा के रखा, उसके लिए जो गारंटीड जो कर्ज की योजना है उसमें आप समझे कि ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा 3.5 लाख करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, अब यह आंकड़ा बढ़कर के 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है, और उसके साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज 2022-23 में दिया जाएगा। एमएसएमई एक बहुत बड़ा फोकस, क्योंकि वित्त मंत्री को यह पता है कि एमएसएमई को फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो उनको सरकार की तरफ से गारंटीड लोन की जो सुविधा है वो 7 लाख करोड़ रुपए की दी जाएगी। स्पष्ट तौर पर जो फोकस है खेती बाड़ी के बाद जो बहुत बड़ा फोकस है वो एमएसएमई सेक्टर पर 7 लाख करोड़ रुपए का सरकारी गारंटी के साथ कर्ज की सुविधा मिलेगी। हर घर नल, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बजट में शुरुआत की गई थी पिछले बजट में, इस साल उसको 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं। करीब करीब 3 करोड़ 80 लाख घरों को जोड़ा जाना है हर घर नल से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो प्रमुख जो योजनाएं हैं उन पर आवंटन लगातार बढ़ा है। आपको बताएं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस पर भी खर्च बढ़ा है, सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना है उस पर भी खर्च बढ़ा है। आगे जाते हुए अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर सभी का इंटरेस्ट था कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के सरकार क्या करेगी। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस तरह से डिजिटल एसेट्स पर हमने देखा कि जो फोकस बढ़ा था, रेगुलेशन की बात उन्होंने की थी, प्रधानमंत्री ने भी लगातार पूरे दुनिया को यह आगाह किया था कि हम क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट नहीं कर सकते, हम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। तो अब ये बजट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देश, आरबीआई अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लेकर के आएगा। एक बहुत बड़ी बात है। बजट में इसका ऐलान किया गया कि डिजिटल करेंसी देश के लिए आएगी, और वो किस फॉर्म में होगी उसका खाका नए साल में आरबीआई हमारे और आपके सामने रखेगा। लेकिन क्रिप्टो की बात करें, जो डिजिटल एसेट्स की बात करें, बहुत सारे लोग डिजिटल एसेट्स में निवेश कर रहे हैं, एनएफटीज में निवेश कर रहे हैं। उन डिजिटल एसेट से अगर कोई भी आमदनी होती है, बजट में कहा गया है कि स्पष्ट तौर पर कि अब आपके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। यानी रेगुलेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक तरह से लेजिटिमेसी भी नहीं दी गई है। जो डिजिटल एसेट्स हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके सारे फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया जाएगा। हर स्तर पर 1% का टीडीएस लगाया जाएगा। अगर किसी ने डिजिटल करेंसी को या फिर डिजिटल एसेट्स को, वर्चुअल एसेट्स को गिफ्ट के तौर पर दिया, तो जो गिफ्ट लेने वाला होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो स्पष्ट तौर पर जो एक एम्बिग्यूटी थी कि क्या होगा क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल एसेट्स में जो निवेश बढ़ रहा है उसका क्या होगा, तो स्पष्ट तौर पर यह बजट कहता है 30% का टैक्स लगेगा, और साथ ही साथ आरबीआई आपके लिए डिजिटल करेंसी लेकर के आएगा। रक्षा क्षेत्र बहुत बड़ा फोकस रहा इस गवर्नमेंट का। पिछले साल के मुकाबले रक्षा का जो बजट है वो बढ़ा है। आपको बताएं कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें अब ऐसा कहा जा रहा है कि देश में ही 68% प्रोडक्शन होगा। जितनी जरूरतें रक्षा क्षेत्र की हैं देश में, उसका 68% प्रोडक्शन देश में ही होना। स्वदेशी उपकरणों पर निर्भरता, यानी रक्षा के मामले में जो देश है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर स्पष्ट तौर पर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.25 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो डिफेंस सेक्टर के लिए रखा गया है। देश में पहली बार 5G टेलीकॉम सेवाओं की बात करता है ये जो बजट है।
टेलीकॉम सेवाएं, जैसा कि हमें पता है कि अभी 4G सेवाएं हमें मिलती हैं, तो सेकंड्स में ही बड़ी बड़ी मूवीज डाउनलोड हो पाना, किस तरह से ये हो पाएगा आगे जाते हुए, और हर गांव में वही इंटरनेट की सुविधाएं मिले, वही ई सर्विसेज की सुविधाएं मिले जो कि शहरों में मिलती हैं, उसकी एक आधारशिला ये बजट रखता हुआ आगे आने वाले दिनों में 5G टेलीकॉम सर्विसेज आपको देश में आती हुई दिखाई देंगी और गांवों में भी शहरों की तरह इंटरनेट सुविधाएं मिलेंगी। और साथ ही बजट को अगर देखा जाए तो अगले 25 साल का जो ब्लूप्रिंट है हमने उसका खाका बजट पे देखा। साथ ही किस तरह से जो रोजगार के मोर्चे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, उसमें 60 लाख नई नौकरियां अब दी जाएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है और हम लगातार जानते हैं कि आम बजट को रेल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो 400 जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं वो अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। लगातार आईपीओ की बात की जा रही थी, एलआईसी का आईपीओ भी आएगा इस साल। और किस तरह से निजी निवेश को बढ़ावा देना है, एक बूस्टर डोज निजी निवेश के मोर्चे पर सरकार ने अपने इस पूरे बजट में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र पे फोकस की, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम बात करते हैं तमाम नारी सशक्तिकरण की, इसका फोकस बजट साफ तौर पर दिखाता हुआ। और इंफ्रा को लेकर जिस तरह से लगातार ये पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि कितना बड़ा एक फंड आवंटन होगा, वो भी हमने देखा। इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। The overall sharp rebound and recovery of the economy